Good morning, Sonak. Okay, so our chapter name is chemical bonding. इस चैप्टर का फायदा यह है कि यहाँ पे कुछ मगअप नहीं करना है. एवरीथिंग इज टोटली कॉन्सेप्चुअल. Okay, so first we will start with octet rule. Look here, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है. दैट इज अबाउट ऑक्टेट रूल. एंड टू अचीव ऑक्टेट, to achieve octet, atom will transfer or share electrons. To achieve octet, atom will transfer or share electrons. For example, if I am talking about water molecule, please focus everyone. H O H. Look here. Each bond consists of 2 electrons. 1 electron of oxygen, 1 electron of hydrogen. 1 electron of oxygen and 1 of hydrogen. तो देखो यहाँ पे मोस्टली ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 are involved in bonding and 4 are remaining. 1 2 3 4. तो जरा इस स्ट्रक्चर में देखो, अभी ऑक्सीजन के सेल में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हियर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. ऑक्सीजन का ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. ऑक्टेट इज कंप्लीटेड एंड हाइड्रोजन का डुप्लेट इज कंप्लीटेड. Octet is completed for oxygen and duplet is completed for hydrogen. Is this clear? इतना clear है बोलो. Okay, this is the basic things you are already known about this. Okay, now next we are going to discuss about limitations of octet rule. That is very important. Ahan, wait for some time. We will do Lewis dot structure in detail. Limitations of octet rule. Okay,
The first limitation is about incomplete octet. Incomplete octet, like focus on some examples here. BeCl2. In BeCl2, one electron, as you can see here, there are 4 electron in Be. Octet is not completed. Octet is not completed. Some other example you can see, like BCl3, BCl, Cl and Cl. Here you can see B, so here you can see there are 6 electron, not 8. I hope you are getting. These are the example of incomplete octet. Next is about expanded octet, or sometimes known as super octet. Look here, if I am talking about SF6, now focus here. Tell me how many electrons? Yes, that is 12 electron. So octet is expanded. Octet is expanded. Now, if I am talking about PCl5, tell me how many electrons? 10 electrons. Okay. So can you tell me, जैसे PCl5 हमने बना लिया, so can we form NCl5? Can we form NCl5? Yes, right. We cannot form NCl5. We cannot form NCl5. We have already discussed about this in the previous chapter, anomalous behavior.
We cannot form NCl5. Okay, very good. So NCl5 will not exist. सुपर एक्सपांडेड ऑक्टेट क्लियर है सबको? I'm not getting your doubt. Jayendra, in expanded octet, there will be more than 8 electron. You can see in the diagram. Next is about third one. Odd electron molecules. Now please focus. If I am talking about NO, so look here. Nitrogen has 5 electrons in its valence shell, and here 2 are already used. Tell me how many are remaining? Yes, 3. So 1, 1, 2, and 3. You can see there is an odd electron. There is an odd electron. Similarly, but here it is not in the case of oxygen. Please focus. Oxygen has involved 2 electrons in bonding, and it has 4 electrons. Okay. Now if I am talking about NO2, NO2. Look here. Only single electron is available now. I hope you are getting what I am saying about. Now you can ask a doubt related to octet rule. Yes, Tanmay, single electron is an odd electron. Yes, Akshat, tell me. Sir, I have a doubt in expanded octet or super octet. Sir, how did you form that SF6? So E S का एक molecule है and F has 6 molecules. So every F molecule will give one electron to the S एक S बॉन्ड में 2 molecule. इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक S का होगा तो दूसरा F का होगा अक्सर. Okay. Okay, sir. Yes, Tanmay, tell me. सर तन्मय. ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना उसमें. हेलो सर. हाँ बोलो. हेलो सर. यस तन्मय, टेल मी. हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना उसमें उसमें एक इलेक्ट्रॉन कभी होगा तो उसको एटम को क्या लॉस होगा उसका? लॉस नहीं होगा लेकिन मॉलिक्यूल स्टेबल भी नहीं होगा ना. ओके. उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना. आर यू गेटिंग? एंड सर इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट ऑक्टेट में बेरिलियम और वो बोरॉन है वो स्टेबल नहीं होंगे ना? नहीं, उतने स्टेबल नहीं होंगे. दे वांट टू स्टेबलाइज देमसेल्फ. एक्चुअली तन्मय, लिसन हियर. यू कैन सी NO2, राइट? यस. तन्मय, अभी देखो, अगर मैं दूसरा यस सर. NO2 ले लूं, एक लुक हियर, अगर मैं दूसरा NO2 ले लूं, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट? एक यस. इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास भी होगा, यस. यस. राइट ना? यस तो सर. क्या मैं दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक बॉन्ड बना सकता हूं? हाँ सर. आर यू गेटिंग? आर यू यस. गेटिंग, तन्मय? यस सर. So molecule will try to stabilize themselves by different methods. ओके सर. Okay. ओके, थैंक यू सर. Yes, Nehil, tell me. सर ये सब कंपाउंड्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होंगे जब स्टेबलाइज ही नहीं हो रहे? नहीं नहीं, स्टेबलाइज बस उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. नेचर में सब कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, NO2 भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, NO2 जनरली NO2 का परसेंटेज वर वेरी लो. NO2 विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2O4. डाइमराइज हो जाएगा वो तुरंत. ओके. देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे NO2 ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, हाँ. तो डाइमराइज हो जाएगा तुरंत. ओके सर. एक्चुअली ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अपने आप को ऑड इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट, ये सब जो ऑक्टेट के एग्जांपल हैं, एक्सेप्शन, दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज देमसेल्फ एज सून एज दे आर गेटिंग फॉर्म. देयर आर डिफरेंट मेथड टू स्टेबलाइज देम. यस सत्यसाम, टेल मी. हेलो सर. यस, टेल मी. सर SF6 स्टेबल है या नहीं? स्टेबल है. सर बट इफ वो सुपर ऑक्टेट बनाता है तो सर उसको और बेटर नहीं होता इफ इट फॉर्म्ड SF4, बिकॉज फिर ऑक्टेट होता. SF4 भी स्टेबल है, SF6 भी स्टेबल है, लेकिन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट स्पेस अवेलेबल है, इसके लिए SF6 बना रहा है. वेयर ऑक्सीजन तो OF6 नहीं बना सकता ना. ठीक है. और सर वो NO2 मिलकर 2NO2 ही बनेगा या N2O4 बनेगा? N2O4 बनेगा. उसका नाम क्या है किसका? N2O4 का? नाइट्रोजन, यू कैन से नाइट्रोजन लिखोगे, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, फिर ऑक्साइड लिखोगे. ओके. यू कैन राइट डाउन नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड. ओके सर, थैंक यू. No, Ahan, that is not nitrogen peroxide. There will be nitrogen 4 oxide. Yes, Atharva, tell me. Sir, if an odd electron molecule wants to stabilize, so उसको और एक odd electron molecule से ही bond करना पड़ेगा ना, कि हाँ, उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट. वो ऐसे मतलब ऑलरेडी स्टेबलाइज जैसे O2 के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता ना. नहीं, O2 अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं ना उसको फिर. ओके सर, थैंक यू सर. Yes, Akshat, tell me. Yes, sir. Actually, I have a doubt in like all these experiments have been performed. So, can we perform in the like normal chemistry lab, or some specialized equipment is required for all these experiments? काफी अच्छे खासे लेबोरेटरी चाहिए, ऐसा नॉर्मल लैब में नहीं होता है. So, ये ionization energy, electron हाँ, ये सब enthalpy, नॉर्मल लैब में नहीं कर hi-fi पाएंगे हम. hi-fi lab चाहिए. हाँ हाँ. Okay. Is this clear to you all? इतना क्लियर है सबको? Okay, very good.
Yes, Anvi, you can call it as nitrogen tetroxide, right? Okay, very good. Okay. Now we are going to see about Lewis structure, how to draw Lewis structure. Now everyone please focus. Very important concept. Very important concept, that is trick to draw Lewis structure. I will explain you with the help of an example. Look here, if I want to draw a structure for NO3 minus. Everyone please focus very properly. Please focus everyone. If I want to draw a structure of NO3 minus, so what I have to do, look here, first I am talking about step 1. In step 1, count valence electron. Now tell me, nitrogen have 5 plus oxygen 6 into 3, 1 minus charge is there, so plus 1, you will get 24. Count valence electron first. Nitrogen have 5, oxygen has 6 into 3 plus 1, you will get 24. A step सबको clear है? Each and every step should be clear to you all. First step, count valence electron. अच्छा थोड़े टाइम के लिए वेट कर लो. स्टेप 2, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंटर में ड्रॉ करना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने एक ऑर्डर दिया था तुम्हें, आई होप यू रिमेंबर, दैट इज फ्रॉन्कल. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंटर में ड्रॉ कर लो. So here nitrogen has less electronegative. That's why nitrogen, oxygen, oxygen, and oxygen. Rishikesh, because minus charge is over there, that's why I have added 1 electron. Ahan, carbon is not there. First step is count all the valence electron. Second step is about write down the atom with less electronegativity at center and all other at surrounding. Akshat, please lower down your hand. Wait for some time. Akshat. Swankal. Now step 3. Step 3 says कि सबके साथ तुम्हें सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है पहले. Draw single bond. Step 3 is very simple. Draw a single bond. Pranav, draw a single bond. Now step 4.
अभी देखो हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया. Now, step 4 is complete the octet of surrounding atom. Complete the octet of surrounding atom. So you can see here. Look here. Here oxygen has 2 electrons in its cell. To complete its octet, I have to draw 6 more. Everyone please focus. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Similar here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have completed the octet of oxygen. Is this step clear? ये step सबको clear है? Okay, हमने surrounding का octet complete कर लिया. Now count the all the electron you have drawn. Can you count all the electrons? 8, 8, 8. We have drawn 24 electrons, right? Am I right? We have drawn 24 electrons. Now the important point, please focus. We have drawn 24 electron, which is equal to this one. Which is equal to this one. अगर मान लो ऐसा केस होता कि मैंने यहाँ पे केवल 22 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए होते, आई होप यू आर गेटिंग. अगर ऐसा केस होता कि मैंने काउंट करने के बाद 22 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं और वो 24 से केवल 2 कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कम है आई विल ड्रॉ देम ऑन नाइट्रोजन. लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे दैट इलेक्ट्रॉन यू हैव टू ड्रॉ ऑन सेंट्रल एटम. लेकिन यहाँ पे 24 इक्वल है. आई होप यू आर गेटिंग. सो नो नीड ऑफ दिस. इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है? Atharva, please wait and focus on steps. तन्मय इन सेकेंड स्टेप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंटर में ड्रॉ करो. नाउ स्टेप 5. नाउ स्टेप 5. Step 5. Complete the octet of central atom now. चलो देखो अब स्टेप 5 क्या बोलता है, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. तो मैंने क्या किया, लुक हियर व्हाट आई एम डूइंग. हियर सेंट्रल एटम हैज फॉर्म्ड 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. इट वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन मोर. तो मैं किसी भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करूंगा. सपोज आई एम इन्वॉल्विंग these 2 electrons. So I will involve these 2 electrons in bonding and I will remove these 2 from here. So this is the structure of NO2 minus. Now the net charge you can see here, net charge is of -1. And please focus the important point,
this is the net charge. Individual charge on nitrogen and oxygen would be different. These are the not the individual charge. Individual charge would be different. Here the -1 is the net charge. Individual charge I will tell you in the formal charge concept. Now you can ask your इंडिविजुअल चार्ज क्या होगा, मैं थोड़ी देर में बताता हूं. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस and tell me if any doubt. Yes, Ahan, in the last step we have to complete the octet of central atom. Yes, Ahtesam, tell me. Hello, sir. Tell me. Sir, in the last step, in order to complete the octet of nitrogen, it took 2 electrons from the first oxygen, ना? So, sir, किसी भी is it ऑक्सीजन से like ले a... सकते हैं. हाँ, sir. Sir, तो ये coordinate bond जैसा है क्या? एक्चुअली मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा नहीं है. एक्चुअली वैसा होता नहीं जैसा मैं बोल रहा हूं. दिस इज द ट्रिक टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. Okay, sir. So, क्योंकि वो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है. या दिस इज द जनरल ट्रिक ओनली. ओके, एक्चुअल केस ऐसा नहीं है. Okay, sir. यस प्रणव, टेल मी. प्रणव, स्नेहल कुमार, टेल मी. सर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. हमने अभी इंडिविजुअल की बात नहीं की है. मैं थोड़ी देर में बताता हूँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है. सर बट 6 इन 3+1 नहीं 3+1 into 3 होना चाहिए ना, क्योंकि ईच ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज हो. नहीं यार, वो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नहीं है. यू कैन सी इन द स्टेप 5 दैट इज -1 फॉर ओवरऑल चार्ज. ओके सर. ओके, यस वीरोक, टेल मी. सर स्टेप 5 फिर से एक्सप्लेन करोगे? विच वन? स्टेप 5. स्टेप 5 में तुम्हें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है. यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे. दैट्स व्हाई मैंने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना दिया. ओके सर. प्रणव विरारी, विल यू प्लीज स्पीक? प्रणव, Pranav, what you are doing, I am not getting. Yes, Akshat, tell me. Sir, actually, sorry, I had a doubt that how can we make NO3 minus? Actually, N तो ठीक है, but O3 is ozone. O3 का ऐसा कुछ formula नहीं है यार, ozone ऐसा कुछ नहीं है. अक्षत क्या बोल रहे हो तुम? So how ऐसे can we कैसे do? NO3 को O3 में ब्रेक करोगे और ओजोन बोलोगे? So कैसे किया? Can you tell me please? NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने. NO3 कैसे बनाएंगे वो टोटली अलग टॉपिक है. Okay, okay, okay. Sorry, sir, sorry. Yes, अथर्व, टेल मी. सर आपने बोला था कि वो जो हम NO का जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो वैसा नहीं होता एक्चुअल में, वो Yes. ट्रिक है ना. तो हाउ इज इट डन इन एक्चुअल? मतलब एक्चुअल थोड़ी देर में हम bond. फॉर्मल चार्ज डिस्कस करेंगे. वहां पे देखो क्या केस है. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? यस. उसने 4 को शेयर किया और 1 को निकाल दिया है. ओके, तो वो करेंगे ना हम लोग. कैन यू सी इन द डायग्राम? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसने. यस सर. हेलो, यस सर. यू कैन सी ना, उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं. यस सर. हाँ, दैट इज द एक्चुअल केस. ओके सर. यस दक्षा, टेल मी.
सर अगर Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 होते और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 22 आ रहे होते, तो फिर हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे ऐड किए थे हमें वो काउंट करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा ना? हाँ, वो काउंट करके कंप्लीट करना है, राइट. हाँ, ओके सर. Okay, I hope this is clear to you all now. Akshat, Jayendra, that is not the case. We are not going to discuss these cases. That is the limitations of these structures. Is this clear now? Tanmay, what you are saying, please raise your hand. Tanmay, I am not getting. Yes, Satyasam, बोलो. सर एक नाइट्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का भी बचा था ना, क्या उसका बोल क्या रहे हो? हुआ? कहाँ बचा था? सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के. तुम्हें सारे स्टेप्स क्लियर हैं? हाँ. ओके, देन डोंट थिंक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स की कौन कहाँ पे है कैसे नहीं है. जस्ट फोकस ऑन 5 स्टेप्स. दिस इज द ट्रिक ओनली. एक्चुअल केस की बात मैंने अभी नहीं की है एहतसाम. ओके. आर यू गेटिंग? हाँ सर. हम अभी फॉर्मल चार्ज करेंगे, तुम्हें पता चलेगा उस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ. ठीक है. Let me tell you, this is the only general trick to draw the structures. Is this clear? Please tell me. Will you try one more? Will you try one? Jayendra, who told you this trick is not applicable? Yaar, what are you saying? Then why I am teaching this if this is not applicable? Jayendra, I am saying your case is not applicable, which you are saying. That case will not happen. Ahan, please let it be. Okay, is this 5 steps to clear you all? Yes, Arpita, that we will discuss on later on. Yes, Arpita, you are right. Okay. Should I give you one to try? Will you try one question? Please tell me. Okay, everyone. Okay, everyone. Now focus on this page. You have to draw in your book. I will show the correct structure, then match with your answer. Okay. Draw in your notebook. You have to draw for CO3 2 minus, for O3 and CO. Please try these structures. Everyone,
Please try in your notebook. I will draw the correct one match with your answer. Everyone, please try. Sam, that is already discussed in the periodic classification of element. Fonkel is the most electronegative element. Fonkel. Please remember Fonkel. FONCL. Okay, Tanmay, wait for some time. Very good. Everyone, please try. Very good, Sneha. Nishant, very good. Try everything. Try all the three, one third. All the three try. Please draw the structure for all the three given. Okay, Dipanshu, very good. Very good, Virok. Try for two more. Anjali, very good. Okay, Arpita, well done. Try for last one. Very good, Tanmay. Okay, Anvi, very good. Prajna Rai, all done. Very good. Well done, Daksha. Sonak, well done. Very good. Should I tell the answers now? Have you all tried? Should I tell the answer?
Okay, once, very good. Well done, Virog. Yes, Neil, I am waiting for all the students to done. Well done, Pranav. Okay, now I am telling you the answers. Everyone stop writing and please focus on board now. Everyone, please focus. I will not repeat. Everyone, please focus now. Everyone, please focus. First one is about CO3. First, count the valence electron. Four plus 6 into 3 plus 2 equal to 24. Draw the central less electronegative atom at center, that is C O O N O. Okay. Draw the single electron, single bond. One bond, second bond, third bond. Complete the octet of surrounding. Complete the octet of surrounding, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet is completed. You can count the total electron. You have drawn how many electron? Tell me. 24. Now complete the octet of central atom. Only 2 are remaining. So you have to remove 2 electron. I am removing these 2 electron to form a bond. I will remove these 2 from here. Now this is the structure of CO3 2 minus. Now, okay. किसका किसका correct है? Please tell me. Have you all done correct? Okay, very good. All are getting correct. Very good. Very good. You all got the correct answer. Okay. Now focus on O3. Everyone now focus on O3. Valence electron 6 into 3 equal to 18. Oxygen, oxygen, oxygen. Draw a single bond. Complete the octet of surrounding here first. Complete the octet of surrounding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now count the total electron. How many you have drawn? Yes, you have drawn 16 electron. So you have to draw 2 electron on central atom.
Now you have drawn 18 electron. Now you have to complete octet of central atom. Central atom has 1, 2, 3, 4, 5, 6. It needs 2 more electron. So I am removing these 2 electron and forming a bond. I hope this structure is correct. This is the structure of O3. How many of you got the correct? Yes, you can take a double bond from any of the oxygen. Yes, very good. You all got the correct answer. Very good. Yes, Naman, wait for some time. I will come to you. Yes, you all got the correct answer. Now focus on CO. Focus on CO. Valence electron 4 plus 6 equal to 10. I will draw first central atom, that is C, surrounding is O. Single bond. Complete the octet of surrounding atom first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Count how many electron you have drawn. You have drawn 8 electron. So first you will draw 2 electron on carbon. You have to draw 2 electron on carbon. 1, 2. Now you have to complete octet of central atom, carbon. Carbon has 4 electron. It requires 4 more. So I am removing 4 electron, 2 from here, 2 from here, and forming 2 more bonds. This is the correct structure for CO. Tell me how many of got the correct answer. Very good, very good. Very nice. Very good. You all got the correct answer. Now tell me any doubt. You can ask your doubts now. Yes, Tanmay, you can make a double bond with anyone. Yes, Atyasam, tell me. Hello, sir. Sir, हाँ, in Atyasam, O3, बोलो. सर इन O3 हम लोग जो दो नीचे के हाँ. एटम वो एटम्स है उन लोग में क्यों बॉन्ड नहीं बना हाँ. सकते हैं? Because they are surrounding atom. सर मैंने क्या सोचा था कि एक ट्रायंगल जैसा शेप बनेगा. ऐसा थोड़ी ना करते हैं हम. सब पर क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे O ही है. लेकिन सराउंडिंग के बीच में बॉन्ड कहाँ बनता है? यहाँ पे CO3 में चेक करो, हमने O के बीच में बॉन्ड बनाया है क्या? नहीं. सराउंडिंग के बीच में बॉन्ड नहीं बनता. ओनली सेंट्रल एंड सराउंडिंग के बीच में बॉन्ड बनाना है. ठीक है सर. थैंक आर यू गेटिंग एहतेशाम? यस सर सिर्फ बीच आर में. यू गेटिंग? यस ओके ओके. यस नेहल कुमार, टेल मी. तो जो CO3 का जो केस है उसमें हाँ? जो ऑक्सीजन के सामने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कार्बन ने दिया है ना. क्या बोल रहे हो? मतलब जो रेड कलर से आपने डिनोट किया है वो एक्चुअली कार्बन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना. नहीं, रेड कलर का जो डिनोट किया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है. नहीं तो बॉन्ड में. बॉन्ड में भी रेड कलर का जो है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है. जो ब्लू कलर का है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है. ओके सर. यस अक्षत, टेल मी. Sir, actually I had doubts in atomic structure का chapter. तुम लास्ट के 10 मिनट में क्लियर कर लेना. Okay sir. Okay.
Okay, is this clear to you all now? इतना क्लियर है सबको? विरोग थोड़ा टाइम रुक जाओ, हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब करेंगे, डोंट वरी. Should I move to next topic? Yes, Nehal, tell me. Nehal. Okay. Now we are going to deal with कि हमने जैसे अभी देखा था NO3 में टोटल चार्ज -1 था, CO3 2 माइनस में टोटल चार्ज -2 है, O3 में 0 है, CO में 0 है. तो व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल एटम विच आर इन्वॉल्व? इंडिविजुअल एटम पे क्या चार्ज होगा? वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट. सो प्लीज फोकस एवरीवन. We will be dealing with individual atom now. Look here, if I am drawing O3. Right, this is the structure of ozone O3 we have drawn earlier. I am naming this oxygen as 1, this as 2, and this as 3. I want to find out charge on every single oxygen atom. So what I will do, we will apply the formula of formal charge. Formal charge equal to valence electron minus electrons minus 1/2 bond pair electron. Look here how to use this. If I'm applying for formal charge on first oxygen equal to, so valence electron would be 6, right? That is same for all, minus. How many electron can you see on oxygen? Tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6 are there. Minus 6 minus 1/2. How many you can see in the bond pair? Tell me. Bond pair you can see 1, 2 electrons are there. So 1/2 into 2 bond pair. After solving, you will get equal to -1. So formal charge on first oxygen is -1. Okay. Now I want to calculate formal charge. Formal charge on second oxygen equal to, valence electron will remain 6. 6 minus lone pair electron कितने हैं? 2 minus 1/2 bond pair. You can see here how many bond pair are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are there. So 1/2 6. On solving you will get +1. On solving you will get +1. Now can you tell me formal charge on third oxygen? Tell me everyone. Formal charge on third oxygen. Everyone please tell me. Yes, 0. 0 is the correct answer. You all got the correct. Six minus 4 minus 1/2 4.
6 minus 4 minus 1 by 2 into 4, you will get 0. Okay, now please focus. Now please focus. Everyone now please focus here. Here this oxygen has -1 charge. This has +1 charge. This has 0 charge. Can you tell me overall charge? Yes, overall charge is 0. I hope you are getting overall charge is 0 here. That's why हम O3 पे कोई चार्ज नहीं दिखाते. Please make a note of it, everyone. अगर किसी को कोई डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड. Yes, Neil, tell me. सर तो फर्स्ट ऑक्सीजन के पास फर्स्ट ऑक्सीजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि फॉर्मल चार्ज भी उसमें अप्लाई करके. 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रॉ किया? हमने 8 किया है ना. नहीं सर, बट नॉर्मली 1. अच्छा, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके लिए उसके ऊपर -1 का चार्ज है. हाँ वही. ओके Okay. सर. Yes, Sam, tell me. Sir, charge on single atom is called formal charge, no? Yes, right. And charge on the full molecule is called Overall charge. overall charge. Okay. Thank you, sir. Okay, everyone. Now try the sums for formal charge, everyone. You have to tell me formal charge for each nitrogen and oxygen in NO3 minus. I am drawing it, please wait. Tell me formal charge on nitrogen and first, second, third and fourth one is nitrogen. Tell me formal charge on each atom. Yes, Abhishek, very good. Tell me formal charge on each atom. Are you getting how to mention your answer? Yes, Abhishek, 2 minus 1, very good. Daksha 1, 0, right. Yes, Abhishek Khade, very good. Abhishek, very good. Yes, Virok, you are getting the wrong answer.
Sonak, you are getting wrong answer. Yes, Dvit, very good. You got the correct one. Swayam, you are getting wrong answer. Yes, Devanshi, very good. You got the all the answer correct. Yes, Pranav, very good. Swayam, you are getting wrong answer for nitrogen. Okay, everyone, now please focus. Everyone, now please focus here. For oxygen 1, it would be 6 minus 4 minus 1 by 2, 4. You will get 0. For oxygen 2, you will get 6 minus 1 by 2, 2. You will get minus 1. Similar for oxygen 3, you will get minus 1. And for nitrogen, you will do 5 minus 0 minus 1 by 2, 8. You will get plus 1. Now please focus. This oxygen has 0 charge. This has minus 1. This has minus 1. This has plus 1. Now can you tell me overall charge? Plus 1, minus 1, minus 1, 0. Yes, overall charge is minus 1. Yes, very good. In this case, overall charge is minus 1. If any doubt, you can raise your hand. Why you are getting wrong answer for nitrogen? I am not getting. Some of you are getting wrong answer for nitrogen. Any doubt, please tell me. Okay. Now we have done with octet rule and Lewis theory. Should I move to next one, next topic? Okay. Now next topic is types of bonds. Types of bond.
Actually, you know, there are two subjects. Yes, you are right. CS and IT. CS is for computer science and IT for information technology. Computer science is one subject and information technology is another subject. Now let me tell you. C for covalent, S for sharing, I for ionic, T for transfer. C for covalent, S for sharing, I for ionic, T for transfer. So please focus. Here covalent bonds are formed by equal sharing of electrons. Ionic bonds are formed by transfer of electron. Coordinate bonds are formed by unequal sharing of electron. Unequal sharing of electron. Now you can say this coordinate bond is also known as day-2 bond. Ionic bond are also known as electrovalent bond. Please note it down everyone. इतना note कर लो पहले. Have you done? Note कर लिया? Okay, now tell me what you want. Should I move to next topic or revise the things which you have done today? What you want? Okay, wait. Yes, Tanmay, but this year you are in 10th. Tanmay, I hope you are getting. Okay, wait. I am showing you all the slides again. This is the first one where we have discussed about octet rule. To achieve octet, atom will transfer or share electron. Like you can see in the here, oxygen has completed its octet and hydrogen has completed its duplet. Second one, limitations of octet rule. We have discussed about incomplete octet like BCl2, BCl3. They have 6 electron and BCl2 has and BCl2 has 4 electrons. Expanded octet, that is super octet, SF6 has 12 electron, PCl5 has 10 electron. Another example can be S2SO4 also, IF7 also. There are the another example you can see IF7 or S2SO4.
odd electron molecule, you can see there is a single electron in NO and NO2. Another example may be ClO2 also. ClO2 is also example of odd electron molecule. Next one is trick to draw Lewis structure. There are 5 steps. In first step, we count the total valence electron. In second step, we write down Virog, it has 14 electron. IF7 has 14 electron. In second step, we write down the less electronegative atom at the center and the more electronegative atom at the surrounding. Step 3, draw the single bond. Step 4, complete the octet of surrounding atom. Step 5, complete the octet of central atom. Then I have given you to try this CO3 2 minus O3 and CO. You all got the correct answer. Very good. Now next one, we have done about formal charge. Here the formula of formal charge is, this is the formula for formal charge. Valence electron minus 1 by 2 electron minus 1 by 2 bond per electron. I hope this is also clear to you all. In this case, in the case of O3, the formal charge is -1, +1 and 0, and the overall charge is 0. Next, in the case of NO3 minus, the overall charge is -1, whereas individual charge on oxygen are -1, 0 and -1, whereas on nitrogen is +1. Then we have seen types of bond, that is covalent, ionic and coordinate. Covalent concept is formed by equal sharing of electron, ionic is formed by transfer of electron, coordinate is formed by unequal sharing of electron. Is this clear? Do you want all these notes to share? क्या मुझे share करना है सारे notes, or you have written everything? Have you written everything, or should I share the notes? Okay, you have written everything. Very good. Okay, very good. Everyone has written. Very nice. Should I start with ionic bond now? Should I start with ionic bond? Okay. We are starting with ionic bond now. Lecture will end at 12:15. Okay, now look here. Ionic bond. You know NaCl. Na has 2, 8, 1, 2, 8, 7. Now 1 electron will get transferred to here. It will get converted to Na plus 2, 8, Cl minus 2, 8, 8. They will combine to form NaCl. That is ionic bond. Is this clear? This is the basic thing. You all are aware, right? Okay. So now you all can ask your doubts. In next class, we will start with more detailed
more detail in ionic bond, that is Born-Haber cycle. In next class, we will start with ionic bond again, that is Born-Haber cycle. You can ask your doubts now. Next class, please remember me. We have to start, remind me, we have to start with Born-Haber cycle. Please remind me. Yes, Akshat, tell me. Yes, sir. I had a doubt in atomic structure that Tell me. expression for velocity and energy of electron in the nth orbit by in that Bohr's model का जो फॉर्मूले आपने लिखाए थे हाँ, वो मेरे को कुछ नहीं समझा सर एक्चुअली उसमें मेरे को समझना समझा नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है अक्षत। तो वो फॉर्मूला आपने काफी कुछ लिखा है उसमें तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जैसे एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेशन तो करना ही नहीं है, मैंने डेरिवेशन कराए थे, डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ओके सर तो वो वैल्यूज दे देंगे हमको हाँ, राइट या राइट कुछ इक्वेशन बना के हमको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा राइट। यस नमन, टेल मी। सर जो TWT के लिए है we just have to refer to our book, no? Yeah, you have to refer my notes, that's it. Notes, okay, sir. Thank you. Bye. Yes Kunal, tell me. Sir, I also have a doubt in atomic structure. Tell me. Uncertainty को कैसे calculate करते हैं वो मुझे समझा नहीं है। देखो, the formula is delta x dot delta p should be greater than h upon 4 pi, right? Yes. उसमें तुम्हें डेल्टा x या तो डेल्टा p दिया होगा या फिर डेल्टा p can be also written as m delta v, right? Sir, हाँ delta p change in momentum है क्या? Delta p can be written as m delta v also, na? Yes. So formula can be also written as delta x dot m delta v should be greater than equal to h upon 4 pi, right? Yes. उसमें तुम्हें कोई एक चीज दी होगी, या तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया होगा या तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी होगी, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू कैलकुलेट। Okay, understood, sir. Thank you. यस देवांशी, टेल मी। सर मुझे ल्यूइस स्ट्रक्चर में डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर एक मिडल इलेक्ट्रॉन और उसे वैलेंस शेल भरने के लिए उसके लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ब्रांच एलिमेंट्स 3 है तो लाइक एक ही से दोनों इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या दो अलग अलग इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से ही लेना पड़ेगा, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से ही लेना है। ओके सर, थैंक यू। यस नमन, टेल मी। नमन। ओह सर सॉरी, हैंड लोअर नहीं किया था। ओके ओके। Okay, thank you so much everyone for joining. I hope you enjoyed the class. I hope you enjoyed the class. Tanmay, ionization energy is minus of total energy. Please revise all the things and prepare for TWT also. Our target is 42 plus.
Bye everyone. Ehtesam, please you can message me on personal chat. Ehtesam. Yes, बोलो. सर बस अभी पूछ लूं. Yes, बोलो. सर का मार्क्स का डिवीजन कैसा होता है, लाइक हर एक सब्जेक्ट का? क्या बोल रहे हो? मार्क्स? हाँ, हर एक सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट. तो 60 होगा. नहीं नहीं, +3, one question +3 -1. अच्छा. Correct answer +3, wrong answer -1, unattempted 0. हाँ, ओके सर. Okay. ठीक है, थैंक यू सर. Okay, thank you so much. Bye, take care.